Hi guys, welcome back to the sessions with evidyarthi.in. This is Archana. In this session, I'll help you to improve your English. हम लोगों को SMS की, WhatsApp की और Facebook मैसेजेस की इतनी आदत हो गई है कि हम लोग अपनी कॉलेजेस में, स्कूल्स में, ऑफिसेस में भी SMS लैंग्वेज यूज करने लगे हैं, which is very bad, which is it's not good at all. अगर हम अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में या फिर बिजनेस लेटर्स में, ऑफिस स्पीचेस में या फिर किसी आर्टिकल में SMS लैंग्वेज यूज करते हैं तो इट लीव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन. तो चलिए देखते हैं कि लोग मोस्टली कहाँ कहाँ पर मिस्टेक्स करते हैं और हम उन्हें किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं. Here we go. Okay. So the first point is contraction and abbreviations. Contractions means जब हम लोग शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर लेते हैं, जैसे कि is not की जगह हम लोग isn't यूज कर देते हैं. That is contraction. So we should not use the short form. The contraction means isn't. We should use is not in formal English. And similarly, cannot की जगह हम लोग अक्सर इसकी शॉर्ट फॉर्म can't यूज करते हैं. तो that is also not good. Contraction कोई भी हमें यूज नहीं करना है फॉर्मल इंग्लिश में. So instead of using can't, use cannot. Okay. So like there are some more examples like are not, aren't. So we should not use aren't. We should use are not. Okay. Then comes abbreviations. Very important because अक्सर हम लोग SMS करते हुए हमें आदत होती है ASAP means as soon as possible लिख देते हैं. तो we should avoid using this in the business letters, business emails या फिर किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में we should avoid using any kind of abbreviations. अक्सर लोग ASAP यूज कर देते हैं और बहुत सारी abbreviations हैं जो कि हम लोग SMS में यूज करते हैं. We should avoid using that in the formal documents. Then phrasal verbs. Phrasal verbs भी हमें अवॉइड करने चाहिए. उनकी जगह हम लोग दूसरे बेटर वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फाइंड आउट. फाइंड आउट की जगह वी कैन यूज डिस्कवर. एंड सिमिलरली अनदर एग्जांपल, पॉइंट आउट की जगह हम लोग इंडिकेट वर्ड यूज कर सकते हैं. दैट इंस्टेड ऑफ सेइंग इट पॉइंट्स आउट, वी कैन से इट इंडिकेट्स. सो सिमिलरली फाइंड आउट में instead of saying I found out, I can say, I should say I discovered. So that's a better word, right? In formal English. Okay. Then we should also try to avoid using idioms. Like हम लोगों को आदत है मोस्टली बोलचाल की भाषा में हम लोग बोल देते हैं it was A1 means it was very good. So instead of saying A1 हम लोग बहुत ज्यादा emphasize करके बताना चाह रहे हैं कि it was very good. It was. So instead of saying A1, we should use the word excellent. Excellent. So it's formal. It's very formal. Okay, then slangs. Slangs बहुत सारे हैं. हम लोग और भी वीडियोस बना रहे हैं जिसमें हम लोग स्लैंग्स को कवर करेंगे. बहुत सारे स्लैंग्स हैं. यहाँ पे हम लोग दो एग्जांपल्स ले रहे हैं. Bad. Instead of using bad, we can say it's negative. Instead of saying it's good, we should say it's positive. So this is more formal. Instead of saying good and bad, we should use positive, negative, right? Okay, then pronouns. We should avoid using pronouns as much as possible. जैसे you can see from the graph. ये बहुत ही इनफॉर्मल, बहुत ही कैजुअल लैंग्वेज है. इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट यू इज प्रोनाउन, तो अगर हम इसे अवॉइड कर सकते हैं तो इट वुड बी गुड. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ, वी कैन से द ग्राफ शोज. तो फॉर्मल प्रेजेंटेशंस में अक्सर हमें ग्राफ दिखाकर रिपोर्ट बतानी होती है, बताना होता है ग्राफ दिखाकर कि ये ग्राफ क्या बता रहा है, इसमें क्या फिगर्स हैं और इनसे क्या पता चल रहा है, रिजल्ट्स बताने होते हैं. तो it's always better to use the graph shows instead of using the pronoun and say you can see from the graph. That's not good. This is good.
Okay, then avoid using negative word like not. So if you want to say that this is not effective, instead of saying this is not effective, you can say this is ineffective. This is ineffective. तो हम लोग एक नेगेटिव वर्ड को हम लोगों ने नॉट और इफेक्टिव को के लिए एक वर्ड यूज कर दिया, दैट इज ineffective. So instead of using not, you are using ineffective. Similarly, if you want to say is not positive, so instead of saying this is not positive, you can say is negative. तो आपको not use करना, try to avoid that. Is negative, right? Okay, then cliche. अक्सर हम लोग बहुत आदत होती है हमें ये भी यूज करने की, जैसे instead of saying in a nutshell, इसकी भी बहुत लंबी लिस्ट है, तो we'll try to cover this in the next video session. आपको एग्जांपल दे रही हूँ, like instead of using in a nutshell, you can say to summarize. This is more formal. So this is good. This is not. This is, you can use this in the casual language with friends and all, but formal English may try to avoid this in a nutshell. Use to summarize. Okay. Acha, vague language. Avoid using vague language like a bit, a lot, kind of, sort of. Instead of saying this, use considerable. Considerable. And a lot, if you, another example, a lot of की जगह आप जैसे many use कर सकते हैं. Many. So such words, you can use such words, considerable, many. So this is not good for formal, informal scenario, and this is good. Okay, then comes personal opinion. So try to avoid giving your personal opinion as much as possible. आपकी थिंकिंग का जो सोर्स है आपको वो बताना चाहिए. फॉर्मल सिचुएशन में, फॉर्मल सिनेरियो में आपकी थिंकिंग का सोर्स मीन्स अगर आपने कहीं कुछ पढ़ा, किसी बुक में पढ़ा, देन tell the name of that writer, share the name of that writer according to then the writer name. According to him, this is the case, this should be the case, etc. And और अगर आपको अपना ओपिनियन देना भी पड़े, then do not say I think. This is not formal. So instead of saying I think, you can say according to me or in my opinion. This is much better in the formal scenario, right? So that was it. अभी हम लोग इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए और भी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बना रहे हैं. तो इन केस यू हैव एनी सजेशंस, आप कुछ जानना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, देन प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट अस इन द कमेंट बॉक्स. आप कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस भेजिए एंड विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल. सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन, गुड बाय.